एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इफ यू गेट योर co-op इन वन ऑफ द टॉप IT कंपनीज तो उसका आपको काफी बेनिफिट हो सकता है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये कि आपकी ओवरऑल प्रोफाइल इंप्रूव हो जाएगी, और दूसरा बेनिफिट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग देयर यू विल स्टार्ट हैविंग कन्वर्सेशंस विद योर सीनियर्स एंड मैनेजर्स हु ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, अ लॉट ऑफ नॉलेज इन देयर फील्ड, जिससे कि आपकी भी नॉलेज इंक्रीज होगी। तो आज मुझे विक्रांत से मिलने जाना है, हु इज वर्किंग एज अ co-op स्टूडेंट इन वन ऑफ द IT कंपनीज। उनसे एक एक स्टेप पूछेंगे दैट हाउ ही गॉट दैट जॉब। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गो। So hi Vikrant, first of all introduce yourself. ये बताओ कि आपका कौन सा कॉलेज है, कौन सा कोर्स है, and where you are doing your co-op right now. Hi Aman, first of all thank you for having me. Studying Masters of Science in Computer Science at University of Windsor and अभी मैं BlackBerry में as a co-op काम कर रहा हूँ Network Operation Center. Network Operation Center. So Vikrant, what are your roles and responsibilities? Monitoring and managing BlackBerry services and products and monitoring the whole network 24/7 such that if an issue happen in any of the service or product offered by BlackBerry to any of the clients, so we basically look after that. तो विक्रांत ये बताओ कि इस पोजीशन के अलावा आपने और किसी पोजीशंस में भी अप्लाई किया था? Positions related to cyber security field, related to security operations center, network operations center, positions related to AI and machine learning roles. तो विक्रांत आपने LinkedIn पर हायरिंग मैनेजर्स या वर्किंग प्रोफेशनल्स को रीच आउट करा था व्हेन यू अप्लाइड फॉर दिस पोजीशन और एनी अदर पोजीशन? मैं क्या करता था कि रैंडम कंपनी का नाम लिख देता था, सर्च बार में डाल देता था टैलेंट एक्विजिशन फॉर यूनिवर्सिटी, देन मेटा, देन कोशिया बैंक, CIBC, पोस्ट कोई हायरिंग मैनेजर आया तो मैं उसको कोल्ड ईमेल भेजता रहता था। विक्रांत, अभी आपने बताया कि आप इन पर्सन इवेंट अटेंड करोगे नेटवर्किंग के लिए, सो विल यू डू एनी प्रिपरेशन फॉर दैट? जैसे कि डेलोइट में अभी इवेंट है, मैंने उनका करियर पोर्टल चेक किया तो वहाँ पे मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड मुझे 2-3 डिफरेंट टाइप की पोजीशन दिखी, तो मैंने अपना रिज्यूमे उस टाइप से ड्राफ्ट करके रख लिया और कवर लेटर भी ड्राफ्ट कर लिया। वहाँ पे उन टीम के हायरिंग मैनेजर से डिस्कस करूंगा कि मैंने ऐसे ऐसे काम किया है, अगर उनको अच्छा लगा तो मैं उनसे रेफरल के लिए पूछूंगा। सो विक्रांत, टेल अस अबाउट योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट ब्लैकबेरी। पता था कि टेक्निकल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, बट बिहेवियरल क्वेश्चंस के लिए मैंने थोड़ा ChatGPT का यूज किया। I copied paste all the roles and responsibilities for that position on ChatGPT and asked ChatGPT to draft interview questions for this position. सो विक्रांत, ब्लैकबेरी में जब आपका इंटरव्यू हुआ तो किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे उन्होंने? Around 30 to 45 minutes में से टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए related to कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन related to नेटवर्क इंसिडेंट्स, जो मैंने पहले काम किया था उससे रिलेटेड, मैंने क्या क्या टूल्स पे काम किया, किसी टूल में मुझे कोई सर्च क्वेरी डालनी हो या कोरिलेशन रूल सेट करने हो तो मैं कैसे करूंगा, वो सब कुछ। उसके बाद अराउंड आधा घंटा बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे। So Vikrant, do you remember any exact technical question? Like in computer network we have concept of OSI layers. One of the layer is network layer, so they asked me like what are the different protocols used in the network layer. So Vikrant, what is your salary range in this position if you are comfortable sharing that? If you are working in data science team, then around $45 to $50 per hour. For a co-op, for software engineering positions, it's between 30 to 35. So Vikrant, are you pursuing any certifications right now? So right now I'm not pursuing any certification, but I can tell you like what are the different certifications one can try to get job in cyber security field. Suppose you are targeting for security operations centers role, you can look for paid certifications like CISM, certified ethical hacker, certified information security professional. If you go on Google and search for cyber security related positions, you will get lot of certifications. एक इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडिया में, उसके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी कंपनी का, he wants to go into IT industry in Canada. So according to you, what steps should that candidate take? When you come here by choosing any of the program, like fully focus what are the courses they are teaching in the program. Apart from that, focus more on the building projects. Try to make good relations with your professors. They will surely help you after once you completed masters. Try to go for these networking events where you can meet new people, reach out to different type of professional people on the LinkedIn. Try to send them the cold emails. So Vikrant, what are your future goals? Currently I am pursuing masters. First of all I want to finish that. After my masters I surely want to try the freelancing industry here. I can work on multiple different type of projects. Freelancers make good money here in Canada, so I surely want to try that. How someone can become a freelancer? So there are various websites here like Upwork and Fiverr, so you can make your account, take the project from there, and after some time you will start getting more projects, more money. So Vikrant, thank you so much for sharing your experience. Do you have at the end anything to share? Most of the international students will watch this video. Keep more focus on learning. Try to do research about what are the opportunities available as per your course. Try to network with the people. Reach out to them on LinkedIn and try to go for more networking events in person.
So when you apply for the jobs online in Canada, it's very important to submit your cover letter along with your resume. So let's discuss some points which are related to cover letters. Just like resume, in cover letter as well, you need to make sure कि आपका cover letter ATS friendly हो, which means job description में जो भी keywords हैं, वो keywords आपके cover letter में भी होने चाहिए. Obviously सारे के सारे keywords match नहीं हो सकते, but you need to make sure कि 80 to 85% of the keywords match हो जाए, so that ATS software आपका resume और cover letter pick कर ले. The main purpose of cover letter is to tell employer that how your skill sets and qualifications align perfectly with the role you're applying for. For example, it's mentioned in the job description that candidate must have good communication skills. So I will mention in my cover letter that in my previous role, I dealt with clients on a regular basis, which improved my communication and interpersonal skills, which means I would be able to deal fairly well enough with the internal members as well as clients of the company I'm applying for. तो मैंने अपने cover letter में ये describe करा कि how I learned that skill and how that skill will benefit the company. So that was just one example. ऐसी और भी काफी सारी skills होगी जो job description में mentioned होगी. तो आपको अपने cover letter में उन्हीं skills के बारे में mention करना है that how you learned those skills and how those skills will benefit the company. So thank you so much for watching this video. I hope this video will be very useful for you in your job hunting journey. And in the next video, I will meet other working professionals and ask about their job hunting experience. So let's meet in the next video.